हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे और थोड़ा करंट कोई कंट्रोवर्सी की बात करेंगे। सो टॉपिक इज ट्रुथ, साइलेंस एंड द यूनिफॉर्म, फ्रॉम हिमालयन ब्लंडर टू 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आपको अंदाजा हो गया होगा टॉपिक क्या है। आपको पता है कि हमारे जो चीफ थे, एक्स चीफ, उनका एक बुक है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसमें एक ऑथर है, एक पब्लिशर है और सरकार है। एंड यू नो करंटली इट इज अंडर सम कंट्रोवर्सी, एंड इस कंट्रोवर्सी में पब्लिशर पेंगुइन के ऊपर पूरा फोकस है कि बुक कैसे बाहर चला गया बिफोर एमओडी क्लियरेंस एंड ऑल दो स्टफ। आप लोगों को पता है ना। सो दिस बुक इज बाय जनरल मनोज मुकुंद नारावाने, who was the 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे एक दो कैंडिडेट्स का कॉल आया था एसएसबी से ये बोल के कि सर इन द एसएसबी इंटरव्यू दे वर क्वेश्चन ऑन दिस बुक इंक्लूडिंग जीडी टॉपिक के ऊपर, एंड वन ऑफ द बॉय वाज क्वेश्चन व्हाट इज द करंट कंट्रोवर्सी अबाउट द बुक बाय जनरल नारवाने, एंड ही वाज एबल टू आंसर कवरिंग कि सर इसके अंदर अग्निवीर के ऊपर लेके कुछ कमेंट्स था, एंड उसके बाद एक स्टेटमेंट था जो गलवान वैली में चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिसेंट, आपको जो सही लगे वैसा करना। विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द एग्जैक्ट part of the communication, but he was able to handle the first part, and then a second part was asked any previous book by any military author which was banned by the government, and yes, why was it banned? Now यहाँ पे he could not answer. ना इंसिडेंटली इसका जिक्र मैंने जो नो योर इंडियन आर्म फोर्सेस सीरीज के जो 3 वीडियोस बनाए हुए हैं उसके अंदर दिया हुआ है, बट समहाउ ही वाज नॉट एबल टू क्या बोलते हैं एक्सप्लेन इट। दैट्स ओके। सो ये बुक जो है वो ब्रिगेडियर जेपी दलवी का है, एंड बुक का नाम है द हिमालयन ब्लंडर। पता नहीं आप लोगों ने शायद सुना होगा तो जरूर मुझे बताना किस रेफरेंस में है। दिस वाज द बुक। नाउ व्हाई दिस कंपैरिजन मैटर्स टुडे, इस वीडियो के पीछे नॉट इट इज नॉट बिकॉज एसएसबी में पूछा, इट इज टू अंडरस्टैंड इन दोनों बुक्स के बीच में देर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज, देर आर सर्टेन डॉट्स दैट यू कैन कनेक्ट, है ना। सो दिस बुक एक्चुअली मैटर्स इवन दो दीज टू बुक्स बिलोंग्स टू डिफरेंट एरा, ऑथर्ड बाय both soldiers, one of the rank of a brigadier and none other than chief of the army staff, right? And they're covering 2 eras, almost 65 years apart. One covering 62 operation, the other recent Galwan Valley जो incident हुआ था, almost 65 years का अंतराल है, but there is a connect, we'll see that. And one recurring discomfort, तब भी हुआ अब भी हुआ. So let's explore what is it, right? In one case truth told too early, and the other case truth told too late. History does not punish nations for losing war, but history does punish nations who refuse to learn from those losses. So today we are not going to compare these two officers, but we are going to see, have we as a nation, as an institution, as an organization matured? That's what is the question. That was the theme of this video today. Brigadier Dalvi told the truth about a military disaster. This was 1962 operation, and he wrote this book after 7 years, 69 May, and the book was banned. His career was quietly ended. In fact, he was offered the Major General rank, which he refused because he wanted to stick with the truth. He wanted this information to come out, because official version में जो actual हुआ incidents वो आता ही नहीं था because of narrative building. And उसी तरह से जनरल नारावाने ने after retirement he reflected on leadership, institution and responsibility through his memoirs, through his book, and once again the same discomfort followed. Reason we'll try to analyze here. So these two books are of different wars, two people with different ranks, one brigadier and one chief of the army staff general, but same unease. So this is a story of two books separated by time but bound by truth. So this is the first book, Himalayan Blunder. In case you need a PDF of this, I have it. I have both the hard copy and soft copy. You can WhatsApp me on this number and I'll send you. And this is the recent book by General Manoj Mukund Naravane, 4 Stars of Destiny, which is currently in controversy. Now, what is to be seen is
Brigadier Dalvi, he was the commander 7 Brigade who lost his men even before the war was declared. Erstwhile नेफा में थे जो कि अभी का अरुणाचल प्रदेश है, and General Naravane, he was the former chief of the army staff who saw the system from the top. So they are not connected by rank, one brigadier, one general, but they're connected by conscience. So Brigadier Dalvi commanded 7 Infantry Brigade during 1962 India-China War, नेफा region में, and it was poorly equipped and आपको पता पीटी शू पहन के और बोल्ट एक्शन पहन के लड़ने गए थे सर्दी में, poorly supplied, pushed into the battle without any preparation, and yet they fought with courage. There is a movie on that. They were destroyed by decisions taken far away from the battlefield. दिल्ली में बैठ के डिसीजन ले रहे थे और नीचे उनकी जान जा रही थी. That was the problem. So Brigadier Dalvi is not a historian, but he's a commander who lived the weight of his men's death. Not only that, he was himself a prisoner of war with the China for 7 months before he was later released. So he has a story to tell. उनका कहना है इस बुक के थ्रू that the Indian soldiers did not fail. What failed is the leadership, the top leadership, military, political, and the hierarchy. उन्होंने इस बुक में पॉइंट आउट किया है the major reasons for this disaster was political interference, strategic blindness, पता ही नहीं चल रहा क्या करना क्या नहीं करना, strategic blindness, disconnect between Delhi and the front. दिल्ली में एसी में बैठ के आप डिसीजन ले रहे हो कि चाइना के साथ हमने क्या करना है. There was a disconnect. एंड इन्होंने इस बुक में क्लियरली 3 लोगों को ब्लेम किया डायरेक्टली, और उसमें पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कृष्ण मेनन हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर देन, एंड जनरल BM कॉल. इनका कोई डायरेक्ट ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल बॉसेस के साथ काफ़ी क्लोज थे, और दैट वाज दिस रीजन फॉर रेज. एंड देन, एंड दिस इज नॉट गॉसिप, दिस इज pure testimony by a soldier. Later, Pandit Nehru ji expired on 27 May 1964. युद्ध के इमीडिएटली बाद सदमा बहुत ज़्यादा लगा. वो हिंदू चीनी बाय बाय करते रहे, पंचशील करते रहे, पीछे से चाइना ने घोप दिया. कॉजेस क्या है हम बाद में अगले किसी वीडियो में देखेंगे, बट आई विल रिक्वेस्ट टू गो थ्रू the causes, consequences and impact of 1962 war. You'll understand. So Nehru ji did not last. उसके बाद गुलजारी नंदा करके एक इंटिम प्राइम मिनिस्टर आए थे, उसके बाद शास्त्री जी बने. सो दैट वाज दी. एंड उसके बाद कृष्ण मेनन एंड जनरल BM कॉल, दे वर रिमूव्ड. कृष्ण मेनन हैड टू रिजाइन एंड जनरल BM कॉल अगेन रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट और व्हाटएवर. And then 69 में this book came, 7 years after the war, after he was released from POW. What he went through POW, you can go in through the books. And then in 69, this book came, Himalayan Blunder. And the reaction to this book, the book was banned. Brigadier Dalvi was never promoted, even though he was told that he will be given major rank if he stops writing this book. But he refused for that. उन्होंने कैरियर से ज़्यादा सच को बाहर लाना सोचा because of his lived experience. And his account was silently sidelined. In fact, this book was originally not published in India. इनकी सिस्टर वॉज इन UK और समवेयर, आई डोंट नो, वहाँ पे इसको पब्लिश कराया था. उसके बाद इंडिया में लाए और इंडिया में इसको बैन कर दिया. एंड इट वॉज वेरी लेट इट वॉज रिलीज फॉर द पब्लिक डोमेन के अंदर. यू कैन चेक कब हुआ था. सो द ऑफिशियल इंक्वायरी, देयर वाज एन ऑफिशियल इंक्वायरी ऑन द 62 वॉर, एंड उसको हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट बोलते हैं. ये आज भी डिक्लासिफाई नहीं हुआ है. सो नोबडी नोज व्हाट हैपेंड. अगर ये हिमालयन ब्लंडर बुक नहीं आता तो रियलिटी का पता ही नहीं चलता, बिकॉज पूरा नैरेटिव बिल्डिंग होता था और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अभी तक डिक्लासिफाई नहीं हुआ है. जिस दिन ये होगा इसके ऊपर भी मूवी बनेगा. एंड इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट हैज बीन डिमांडिंग कि हैंडरसन रिपोर्ट को पब्लिश करो, बट नाउ दे देमसेल्फ गॉट इनटू अ ट्रबल because of this book by General Naravane. So these are 2 different books from different era. In one, the truth is still buried in files. मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करो कि हिमालयन ब्लंडर में इट इज़ रिटन बाय नॉट एन हिस्टोरियन बट अ पर्सन हु हैज बीन इन द वॉर, वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड हैज गॉन थ्रू हेल, whereas this is an official version of it. इन दोनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना आप करना. इट विल गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट इनटू हाउ द आर्म फोर्सेस एंड हिस्ट्रीज एंड नैरेटिव्स आर शेप्ड.
right? Nation ka. So the point is, truth may be written by Brigadier Dalvi, but it is not welcome. So when Brigadier Dalvi spoke, the nation was not ready because 7 साल के अंदर इनका ये book आ गया था. People in power were still there. It was too uncomfortable for such a brutal reality to be conveyed to the public through this book, Himalayan Blunder. So the nation was not ready, and Brigadier Dalvi spoke too early. Now comes the next book by General Mukund Naravane, 4 Stars of Destiny. It is not about a lost war. We didn't lose the war. It was a conflict, Galwan Valley के time पे, है ना? So this book is about leadership, senior leadership, political leadership, top military leadership, civil military relationship, and institutional decision making. आपको पता है, Indian Armed Forces, unlike Pakistan, we operate under the civilian government. We have bureaucratic people on top, and then we have the government, Ministry of Defense and Prime Minister. So we don't act at our own. So this is about institutional decision making. इसके बारे में आगे बात करेंगे. But this book does not compromise operations or any secret is revealed. है ना? Then why this controversy? सवाल ये है, फिर अगर उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है तो कंट्रोवर्सी किस चीज का है? That is interesting. इस बुक में कहीं पे भी जनरल नरवाने is not accusing anybody, neither government nor anything. He is simply reflecting. क्या चिंतन करना गलत है? क्योंकि जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, there is no learning. Otherwise, you will keep repeating the same mistake. It happened in 62, it will happen again, right? So, General Naravane, he operated within the system 40 years plus, and he has benefited from this. He is the chief of the army staff, brilliant officer, man of integrity, and he also saw limitations. I'm sure he would have conveyed it, and he also decided to put it in his memoir in very light form. His tone was very restrained as per his various interviews, and his language was professional. कहीं पे भी anti-government feel नहीं है. In fact, many places he has praised government for the way they have taken decisions at various stages. So yet this is a discomfort which is very, very familiar. We experienced in 62, we experienced at other places. ताज होटल में अटैक हुआ और पराक्रम हुआ, पड़े रहे वहाँ पे फौज, लेकिन कुछ हुआ नहीं. क्यों? Institutional decision making was lacking. Armed forces would have acted, but armed forces operates under the civilian administration. So you also need to have a very powerful political decision making apparatus so that the armed forces can execute the will of the government. But if the will of the government itself is not there, then ताज भी होगा, पार्लियामेंट में अटैक भी होगा, कसब भी आएगा, but हम बोलते रह जाएंगे, because institutional decision making is critical for the Indian Armed Forces to decisively act. So 2 books, there are a lot of similarity. The first similarity is both are by people in uniform. So it's not an account by a journalist or a politician or a activist. No, it is by soldier. One soldier who himself commanded a brigade and was directly involved, prisoner of war 7 months. The other led the Indian army. So both of them are soldiers. And that is precisely the problem, because when insiders speak, the institution cannot dismiss it so easily, even if they want to. How can they dismiss the accounts by Brigadier Dalvi, who himself fought and was a POW? General Manoj Mukund Naravane, chief of the army staff, man of integrity. When he speaks, it rattles. So it's very easy to say कि publisher झूठ बोल रहा है या General Naravane झूठ बोल रहा है. That's politics. That's politics. Similarity number 2. 1969, silence was enforced through ban. बिल्कुल ban, खत्म. Promotion लो, चुप रहो. उन्होंने बोला promotion नहीं चाहिए, चलो book भी ban. ना promotion देंगे, ना book publish होने देंगे. So it was directly enforced, right? Today, we are more sophisticated. Silence is encouraged to advise. You're advised to keep your memoir safe or whatever. Advice समझते हो ना, प्यार से. Through reminders of tradition, armed forces का tradition. ट्रेडिशन के नाम से चुप रहो. थ्रू अपील्स टू इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन. कि आर्म फोर्सेस एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन कितना भी दर्द हो रोता नहीं है. सो व्हाट हैज चेंज्ड इज द मेथड हैज इवॉल्व्ड. द मेथड ऑफ साइलेंसिंग हैज इवॉल्व्ड, बट द इंस्टिंक्ट इज सेम. दैट हैज नॉट चेंज्ड. Similarity number 3, loyalty is expected downward, not upward.
भैया आप चीफ हो, बी लॉयल, आप आर्मी कमांडर हो, बी लॉयल, आप कैप्टन हो, बी लॉयल. सो लॉयल्टी इज ऑल डाउनवर्ड. व्हाट अबाउट द अपवर्ड लॉयल्टी? अपवर्ड लॉयल्टी भी तो होना चाहिए. सो सोल्जर्स मस्ट ओबे. नाउ सोल्जर्स मतलब जनरल नारावन इज ऑल्सो a soldier. He should obey. Brigadier Dalvi should obey. Whether you're prepared, not prepared, whether we give you bullshit orders from Delhi, you will obey. No questions asked. That's soldier. So commanders must absorb blame. अगर हार जाते हो, you take the blame. और अगर जीत जाते हो ऑपरेशन सिंदूर, हम रिपब्लिक डे में झांकी निकालेंगे, हम इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी बना देंगे. सो कमांडर्स मस्ट एब्सॉर्ब ब्लेम. इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट बी क्वेश्चनड. आप ब्लेम ले लो, चुप रहो. सक्सेस विल टेक द क्रेडिट, फेलियर यू टेक द ब्लेम. दैट्स नॉट लीडरशिप. सो ब्रिगेडियर दलवी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस. He said no, मुझे मेजर जनरल रैंक नहीं चाहिए. I'll write the book. And General Naravane, he is silently questioning it, not even questioning it, he's just subtly putting it. And in both cases, that makes institution uncomfortable. So they're controversial. जिसने सच बोला वो controversial. So silent रहो. तो क्या silence is equal to loyalty? I don't think. So ब्रिगेडियर दलवी का जो रिकॉर्ड है, इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्लीट ब्रिगेड, 7 ब्रिगेड जो उनका नेफा में था, विदाउट इवन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. वॉर का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, पूरा धज्जियां उड़ा दिया एक ब्रिगेड का. नो बंदूक, नो शू, नो वेपन, नथिंग, नो कोल्ड, कुछ नहीं, मरवा दिया पूरा. उनके बुक में लिखा है चाइनीज ने हिंदुस्तानी सोल्जर्स को कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा, फिजिकल हाथ से लड़ रहे थे. दिस इज नॉट द वे सोल्जर्स फाइट. So, Brigadier Dalvi ka book is a record of the destruction of a brigade without even a declaration of war. और अभी भी वो गलवान में कर्नल बाबू और उनके साथ लकड़ी में तार बांध के मार मार के 20 लोगों को मार दिया, जो भी 19-20. एंड देन हम देखते रहे कि क्या करना है. सो जनरल नरवाने ने क्या पूछ रहे हैं कि आर वी स्ट्रक्चरली capable of preventing such failures again? Structurally, not militarily. Militarily, you tell us, we will go. Brigadier Dalvi गए ना, विदाउट वेपन भी गए वो, विदाउट पीटी शू, विदाउट शू, विदाउट कॉम्बैट ड्रेस, सब गए ना वो. सो आर्म फोर्सेस विल डू. द क्वेश्चन इज, आर वी स्ट्रक्चरली केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग सच फेलियर्स अगेन? दैट्स वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन टू आस्क. डिफरेंट वर्ड्स, सेम कंसर्न्स. What has changed since 1962? Definitely better weapons, better logistics, better infrastructure development, faster response, mobility. बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है. What has to be understood is ब्रिगेडियर दलवी का जो बुक है और उसके जो कंटेंट है, it is not about tactics, it is about ethics. Tactics, so definitely there is a failure, but more than tactics, military tactical failure, it is about ethics. उसके ऊपर सवाल उठाया था. So Brigadier Dalvi did not wanted India to take revenge, but what he wanted was learning. If there is no learning from the past mistake, you cannot correct. Suppressing truth creates myth. सच अगर नहीं बताओगे तो हवा में assumption शुरू हो जाएंगे. That was his argument. So he wanted the truth to come out, which the institution did not want it to come out. Next is, myths अगर शुरू हो गए तो complacency आ जाएगा, क्योंकि सच कभी पता ही नहीं होगा, और complacency आ गया तो फ्यूचर में दोबारा यही मिस्टेक्स हो जाएंगे. That was his argument through the book, and this lesson remains uncomfortable. ये बड़ा गंदा है भैया, सच नहीं चाहिए, नैरेटिव चलने दो. सो नैरेटिव इज ओके, बट किसी ना किसी स्टेज में तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, व्हाट वेंट रॉन्ग. सो ब्रिगेडियर दलवी का आर्ग्यूमेंट था, द ट्रुथ मस्ट कम, अदरवाइज मिथ विल स्टार्ट फ्लोटिंग. ना सवाल है, इतने साल हो गए 62 वॉर को, हैव यू लर्न द लेसन? नाउ इफ यू लर्न द लेसन, देन व्हाई दिस हैंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट इज स्टिल क्लासिफाइड? क्यों नहीं पब्लिक में आता? क्यों नहीं देश को और मिलिट्री लीडरशिप को, आज के जनरेशन को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, सबको पता चले क्या हुआ था 1962 में इतना बुरी तरह से? अब तो बहुत साल हो गए, अभी भी नहीं निकला. सो क्वेश्चन इज, हैव वी लर्नड? यू कैन डिसाइड. डज रिफ्लेक्शन बाय सीनियर ऑफिसर्स, शुड इट कॉज एंजाइटी? सीनियर ऑफिसर्स अगर अपना फेलियर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, मिशंस फेलियर को नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग को नहीं करेंगे, हाउ विल द टॉप करेक्ट?
Kargil might happen, intelligence failure. So there is a lot of inward looking required so that those things does not happen again. So the question is, does reflection by senior officer, should it cause worry? If yes, then how will we change? That's a fundamental question that we need to answer. So the answers or the absence of answers, in both cases, it gives a lot of answers, even more than any book can. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो जिस तरह से अभी फिलहाल में बातें हो रही है और जिस तरह से पेंगुइन को लपेटा गया है, ठीक है, पेंगुइन से बुक हो गया, गलती हो गया, सारा प्रॉब्लम हुआ है, ये नहीं पता चल रहा 2 साल से ज़्यादा हो गया, इसके ऊपर कोई कमेंट क्यों नहीं आया? आप इसे एमओडी या तो क्लियर करो या नहीं करो, एंड टेल द रीज़न इस कारण से नहीं कर सकते. इसको लटका के क्यों रखा है? ठीक है, पेंगुइन ने कर दिया जो भी कर दिया, ना राहुल गांधी के पास वो बुक क्यों आया, ठीक है, वो सब करो, बट देन गलत जगह पे निशाना मार रहे हो, है ना? So the answer or the lack of answer actually is answering more than any book can ever do. So ये जनरल नरवाने का बुक आए या ना आए, इतना curiosity generate हो गया because of all these things in the ban that people will find ways to get it. आजकल ऑनलाइन के ज़माने में it is not easy to hide. So Brigadier Dalvi spoke too early and was punished. And General Naravane, he spoke much later after his retirement, and it still causes discomfort. This should worry the nation. This should worry the military top leadership and also at all levels of hierarchy. Because ये अगर fix नहीं किया, there is something wrong. The top leadership has to align. The institution has to align. We need people who can take strong decisions when required. Otherwise, junior leadership and ground level पे सिपाही लोग घास फूस की तरह कट जाएंगे. We have seen happening multiple times. So if you see, the problem is not the timing of the book. The problem is of culture. Book कब आया, क्यों publish किया, late हुआ, जल्दी आया, that's all one side. The problem is the culture, the national character. ऑपरेशन सिंदूर की तो हम झांकियाँ निकालते हैं, पतंग उड़ाते हैं, आड़ी परेड में झांकियाँ निकल रही है, you celebrate, that's fine. You actually politicize this, that's very unfortunate. No, आर्म फोर्सेस को थोड़ा आपके वोट बैंक से दूर ही रखोगे तो अच्छा है. आर्म फोर्सेस कैन नॉट बी यूज फॉर झांकी निकालने के लिए. बट एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज अ फेलियर, at that time also you should take accountability. उस time the entire responsibility of accountability goes to the top military leaders. What about Operation Parakram? किसने परमिशन नहीं दिया? यूएस तो बोल रहा था जाओ अटैक करो आपके पार्लियामेंट में, बट वी केप्ट लाइंग देयर. कौन यूएन में गया था 47-48 में? Kargil में we were not allowed to cross the LOC. So things are changing, but we need to be a little more focused about what are we doing with our armed forces and their capabilities. Armed forces will do. It will execute the will of the political masters. But the political masters must show the will. Otherwise, armed forces के soldiers, नीचे level के soldiers, officers मारे जाएंगे. So what should a strong institution do? The strong institution should encourage internal critique. इसको पॉलिटिसाइज ना करके एक लर्निंग टूल करना है कि ताकि सुधार हो सके. बट अगर उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दोगे, इट विल नॉट हैपन. प्रिजर्व मेमोरी, बिकॉज इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक, दिस मिस्टेक विल कीप हैपनिंग. सो एंडरसन फाइल को रिलीज करो. इस बुक को भी हो सकता तो करो, सो दैट वी नो व्हाट्स हैपनिंग. बुक रिलीज हो या ना हो, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज institutional memory should be preserved, otherwise we'll not learn. Learn publicly from failure. Let nation know what went wrong, so that there is a moral pressure on correcting it, rather than hiding behind Anderson Brooks file and national security concern. Weak institutions क्या करेगा? They will suppress uncomfortable voices. They will suppress truth, rewrite narratives, such narrative that helps their political aspirations, and punish honesty politely, sometimes very, very silently. So question is, इन दोनों में किस साइड हम जा रहे हैं? That's a point for reflection. I think all of you understand. आप लोग सब मिलिट्री लीडर बनने जा रहे हो, सोचो जरा, एसएसबी जा रहे हो, think it over, अपने अंदर गहराई लाओ. Now, why I'm addressing the Service Selection Board interview? Not because somebody asked the interview question there. That's definitely, this matters. This is not a academic comparison. 62 और current इसको कोई academic comparison के लिए नहीं है. This is raw testing of leadership. जिसको आप officer like quality बोलते हो. So it is about moral courage. Both officers have demonstrated
ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मॉरल करेज। ब्रिगेडियर दलवी को मेजर जनरल का ऑफर था, चुप रहते तो शांत रहते, लेकिन ही डिसाइडेड टू स्पीक। जनरल नरवाने रिटायर हो चुके थे, अच्छी अच्छी बात बोलते तो कहीं गवर्नर बन जाते, बट ही डिसाइडेड टू स्पीक और मे बी राइट, है ना। सो इट्स अबाउट मॉरल करेज, इंटीग्रिटी ओवर कैरियर सेफ्टी। कैरियर के नाम पे, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज के नाम पे मैं अपने इंटीग्रिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इंटीग्रिटी इज अ कोर क्वालिटी। कोई आपको देखे या ना देखे, सच बोलने की क्षमता। दिस इज एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो। व्हेन यू गो टू द एसएसबी, रिकमेंडेशन की चाह में कुछ भी कर लेना, नो, अपने ऊपर काम करो। दीज आर कोर पर्सनालिटी ट्रेड्स जो कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू के साथ अलाइन करना है। सो इंटीग्रिटी ओवर कैरियर सेफ्टी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। इफ यू नो समथिंग इज रॉन्ग, हैव द करेज टू से इट इज रॉन्ग, एंड इफ यू नो समथिंग इज रॉन्ग, हैव द करेज टू फिक्स इट। अपने ग्रीड के लिए अपने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को ताक पे मत लगाओ। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, we need officers who can think, not just blindly follow orders. We want people who can think. In the complex military domain, जिस तरह का आजकल वॉरफेयर का स्ट्रक्चर बन गया, we want people who can think, ना कि yes man करने वाले। And अगर आपको समझ में आ रहा है तो we have an example. 1971 में there are so many examples. तो highest level पे है, but there are so many examples. So the burden of conscience, जब आपकी चेतना आपको तकलीफ देती है अंदर से, तो ब्रिगेडियर दलवी died at the age of 57 because of the burden that he was carrying of the entire brigade, 7 brigade के लोगों को जो death हुआ था, and what was subsequent thing, he carries that burden, he carried that burden, and he expired at the age of 57, maybe 56. And General Naravane, he carries a silent burden of institutional memory. बोले या ना बोले, उनका बुक पब्लिश हो या ना पब्लिश हो, उनके दिल में तो ये पड़ा हुआ है ना। So that's the cost of conscience का burden. So both burdens come with rank. The higher you go in the rank, the more you will feel it. It happens even at lower level, any level of leadership. There is a burden of conscience if you're a man of conscience. So both require courage beyond battlefield. So whatever they have done is not in the battlefield, it is outside the battlefield. It requires courage, moral courage, strength of character, value clarity, personal integrity, loyalty and trust, दोनों को balance कर पाने की क्षमता. So history is not asking us to choose between Brigadier Dalvi and General Naravane. No, we don't have to choose. Have we become mature enough to listen? This is the question that history will ask. And if you have not become mature, then there is a problem. So India did not weaken because Brigadier Dalvi wrote Himalayan Blunder. No, India did not. Even India will not become weakened because General Naravane wrote 4 Stars of Destiny. No, India इतना कमजोर तो नहीं है कि 2 बुक लिख दो इंडिया हिल जाएगा, नहीं हिलेगा ना. But a nation weakens only when it refuses to confront realities, confront themselves, confront the hard truth. Then there is a problem. So इस पूरे वीडियो का मैसेज ये है that truth does not damage institutions. Fear of truth does. This is applicable to our life also. So sometimes it is easier to face the truth than to mask it. So अंत में ये कहूँगा, the uniform definitely deserves loyalty, but the nation deserves the truth, and the truth must come out. So it's a point for reflection. Truth is not disloyalty, and similarly, keeping silence is not patriotism. Choose wisely. So मुझे बताना कि ये वीडियो से आपको क्या समझ में आया. I will make more videos on this topic because ये आपको एक बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव मिलेगा. What are the challenges of serving the army? आप लोग सब ऑफिसर्स बनना चाहते हो, but it will come with a lot of cost, and that you must know. There is always the other side of the coin. So जरूर कमेंट लिख के बताना. इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना in case you need the book. And thank you and may God bless you. Thank you very much.